Hello friends, welcome to the channel. तो आम प्रीवियस वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करते आज रोज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तो चलो लेट न कर स्टार्ट करवा तो 24 एटा 23 जाके थिला देन एटा हो 24 टू नेकी तो 24 अच्छे सेल मेम्ब्रेन कहले आम कौन बुझा लाइक सेमी परमेबल परमेबल सिलेक्टेबल परमेबल इम्परमेबल 24 करेक्ट ऑप्शन हम सी selectable permeable. Then 25 अच्छी the membrane which allows passage of certain substances more rapidly than others. Selective गोटे membrane जोटा किसी certain जिनस को लेकिन कौन कराए पैसेज कराए तो कौन कहुए से तो 25 रोचे डी सिलेक्टिवली परमेबल. तब देखिए 26 the movement of molecules from an area of higher concentration to lower an area of the lower concentration. तो तब कौन कह जाए गोटे हायर जगार गोटे लोअर को जीव जगह को जाए जोटा से कौन कह जाए 26 हम डिफ्यूजन. देन 27 अच्छी द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग. देखिए गोटे डिफ्यूजन गोटे स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं अफेक्ट करे तो तार क्या माने एफेक्ट करे आ भर कौटा न करे माने सब करे तीन टा थी करुचे भर गोटे करूनी तो जोटा इनक्लूड नुह तो 27 करेक्ट ऑप्शन हम बी एटीपी अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी. देन आसला 28 इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन कौन कहले कौन बुझाए तो ये गोटे देखो फास्ट ऑप्शन ए अच्छी पढ़े बी अच्छी पढ़े देन मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स क्रिएट तो आर करेक्ट ऑप्शन हम से गोटे नुआ यहाँ डी ए मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक सल्यूट एंड देन अंडरगोज ए कन्फर्मेशनल चेंज. तो 29 हूँ ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज ऑस्मोसिस कहले आम कौन बुझुँ 29 करेक्ट ऑप्शन हम ए देखिए गोटे फ्लो गोटे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कौन करे ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नु गोटे रीजन नु लोअर रु हायर को जाए सेटा होची ऑस्मोसिस आ जोटा हायर रु लोअर को जाए सेटा कहते डिफ्यूजन. ओके देन 29 गला 20 30 आइला 30 अच्छी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इनवॉल्व द मूवमेंट ऑफ कौन इनवॉल्व करे 30 करेक्ट ऑप्शन हम बी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. देन 31 अच्छी ऑस्मोसिस वाटर ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स ऑस्मोसिस जो तार जो रहा वाटर मूव्स टुवर्ड्स द डैश सॉल्यूशन दैट इज टुवर्ड्स द सॉल्यूशन विथ द सॉल्यूट कंसंट्रेशन 31 करेक्ट ऑप्शन हम डी जोटा कि हाइपोटोनिक टू ग्रेटर moves towards the hypotonic solution that is towards the solution with the greater solute concentration. Then 32 अच्छी 32 रे अच्छी RBC undergoes crenation when they are placed in तो 32 रा क्रेडिशन अब C. Then 33 a cell is equally permeable to sucrose solution and in sodium chloride solution. First, when the cell put in 0.6 millimeter sucrose solution, there is no change in size, but when put in 0.6 meter nitrogen chloride solution is size will the 33 correct option of B decrease. 34 correct option हम देखो कौन अच्छी क्वेश्चन इफ ए लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन द सेल विल हाँ 34 अच्छी इफ ए लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन द सेल विल और देखिए जब लिविंग प्लांट सेल गोटे कन्संट्रेटेड सुगर रखा देन सेल वाल कौन हम तार 34 करेक्ट ऑप्शन हम बी वाटर लूज कर प्लाज्मोलाइज्ड हो. Then 35 अच्छी which of the following is not concerned with movement of material in and out of cells 35 रा correct option हम surface tension. 36 which in a plant cell the shrinking of protoplasm is called कौन कहते shrink करीगले ना 36 रा D हम जोटा कि plasmolysis कहते. Then 37 अच्छी plasmolysis in a cell occurs when it is kept in 37 प्लाज्मोलाइसिस हुए तो सेल अकर्स व्हेन इट केप्ट इन कौ थे रखिले से प्लाज्मोलाइसिस हुए तो 37 करेक्ट ऑप्शन हम डी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. 38
38 अच्छी कौन देखो the concentration of solute in a red blood cell is about 2%. Sucrose cannot pass through the membrane but water and urea can. Osmosis would cause red blood cells to shrink the most when immersed in which of the following solution. 38 correct option about D, hypotonic sucrose solution. Then 39 movement of ions or molecules in a direction opposite to of that prevailing electrochemical gradient is known as. 39 correct option हम D, active transport हम. तापर 40 रे active transport कहले कौन बुझंती? active transport कहले requires energy बुझंती हमें. तापर 41 होची main difference between active and passive transport across cell membrane is that the difference कौन ट्रांसपोर्ट जो हमर अछि ओटा एक्टिव ओटा पैसिव ता भीतर डिफरेंस कौन 41 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी जोटा कि देछि एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर करे और एक्टिव रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी. ओके then 42 which of the following is the difference between active AT and FD facilitated diffusion. 42 रा करेक्ट ऑप्शन नंबर 42 रा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी AT equals energy, ATP or FT does not. Then also 43 की जगह 43 अच्छी the biomembranes allow active transport of substances because कौन पाई ना a carrier is needed for transport. Then 44 the sodium and potassium pumps transport कौन करे transport 44 रो correct option नंबर D. 45 अच्छे carrier proteins are involved in carrier protein कौन involve करे 45 वो active transport of ions passive transport of ions options देखी दियंतु 45 रो correct option नंबर A active transport of ions. 46 enzyme that facilitates the transport through cell membrane को एंजाइम टा जोटा ट्रांसपोर्ट देके सेल मेम्ब्रेन ही करे फैसिलिटेट करे ना 46 रो करेक्ट ऑप्शन होबो बी जोटा परमिएज. Then 47 which of the following enables a cell to pick up and concentrated on a specific kind of molecule. ता भितरु कोटा सेल को पिक अप करके कंसंट्रेट करे स्पेसिफिक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कोन ना 47 ना करेक्ट ऑप्शन होबो डी जोटा कि रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. ओके 47 and 48 को आसले 48 अछि द टर्म phagocytes has been coined by किए देथिले 48 रो करेक्ट ऑप्शन हबो सी जे कि मेचिनकॉफ. देन 49 अछि phagocytosis may be characterized by which of the following statements. 49 correct option number D it involves the uptake of cellular debris in large and endocytic vesicles. Then achi 50 achhi the blood cell which shows phagocytosis is the correct option dekhon adro ka habo 50 correct option habo A monocyte. Then asle 51 which of the following involves the non selective uptake of tiny droplets of extracellular fluid. कोड़ा इन्वॉल्व करे नॉन सेलेक्टिव अपटेक ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. तो 51 करेक्ट ऑप्शन होबो बी व्हिच इज पिनोसाइटोसिस. देन 52 को जिबा एटा लास्ट क्वेश्चन रहबा डेटा रहबा सेल मेम्ब्रेन 52 होची देखंतु फिनोसाइटोसिस कहले हम कोन बुझे फिनोसाइटोसिस कहले हम इंजेक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स को बुझाओ. देन 53 अछि द वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स पास थ्रू द प्रोटीन्स कौन कह जाए ना 53 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज चैनल प्रोटीन. 53 जंके हमर सरीला स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जोटा कि एटा सेल मेम्ब्रेन नथिला ना सॉरी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होतिला. तो नेक्स्ट होजी सेल वॉल रहइबो जोटा नेक्स्ट वीडियो रे हम डिस्कस करबा. यदि किछि हेल्पफुल होची देन लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु. थैंक यू.